The lantern and the fan. Long ago in Japan, there lived an old man with his two loving sons. As the sons grew old, they got married and brought home their lovely, accomplished wives. They all lived happily together. A few months later, the daughter in law wished to go home and visit their parents and friends. As the Japanese custom then, all the decisions in the household were taken by the father of the house. So the two wives asked their father in law, "It is a long time since we have seen our friend. May we go to our old home and visit them?" The father in law answered no. After many months, they asked again and again. He answered no. The father in law felt they didn't care about him and decided to test their love. He said to the older of the two wives, "You may go if you wish, but don't come back unless you bring me fire wrap in the paper." To the younger he said, "You may go if you wish, but you must bring me wind wrapped in a paper. Now I shall find out if they care for me. They will search the country through till they find paper that will hold fire and wind," he thought to himself. The two young wives spent a month visiting their old home. They forgot all about the gifts they were bringing to their father-in-law. When it was time to return, they were greatly troubled. They asked many wise men where to find paper that will hold fire and wind. Everyone declared there is no such paper in Japan. Sad and tearful, the two wives wandered a long distance into the forest. "I do not let people cry in my woods," said a wise. "My trees do not grow well in salt water." The poor wives were so sorrowful that they forgot to be afraid. The older one said, "Can we help crying? Unless I can find fire wrapped in paper, I can never go home. And I can never go home," wailed the younger, "unless I can carry the wind wrapped in paper." None of the wise men were heard of such thing. "What shall we do?" "It is easy to wrap the fire in paper," answered the wise. "Here is a piece of paper. Now watch." They watched, and the strangest thing in all the world happened right before their eyes. A piece of paper appeared suddenly on the ground and folded itself into a Japanese lantern. "Now put a candle inside," and said the wise, "you have the paper holding fire." The older woman was happy, but the younger woman was still sad. She saw now that fire could be carried in paper, but surely no one could carry the wind. "Oh dear wise," she cried, "can anyone carry the wind in the paper?" "That is much easier than to carry fire," replied the wise, "for wind does not burn holes. Watch." They watched eagerly. Another piece of paper came all by itself and lay on the ground. "Here is the piece. There is always a plenty of wind," said the wise. Some long light twigs flipped to the paper. It folded itself over under together. It opened and closed and waved itself before the tearful face of the young woman. "Does not the wind come to your face?" asked the wise. "And it is not the fan that has brought it. The lantern carries the fire wrapped in the paper, and the fan carries the wind wrapped in the paper." The two young women returned home happily with their gift. Their father-in-law greeted them loudly and said, "No one ever had such a marvel at the lantern and the fan. But in my home there are two more precious things than this, and they are my two dear daughters." Here are some things which is very important while reading the lesson. You should read the lesson in a proper manner. You should understand it, why we are reading it, and some technical questions. यानी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं तुमको बोलूँ कि तुम हाथी को खा लो, हाथी को खा लो, ऐसा मैंने तुमको बोला, तुम बोलेंगे क्या सर मजाक कर रहे, हाथी को खा सकते क्या? अरे हाथी का केक बनाओ, केक को खा लो, बनाते ना लोग, ठीक है। उसके बाद मैंने तुमको बोला जाओ पहाड़ पे चढ़ जाओ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ। अरे सर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं? हाँ चढ़ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट का फोटो रखो, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, हो गया, चढ़ गया। सोचने की बात है कि तुम किस तरह से सोचते हो, तुमने किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिया। एक क्वेश्चन है जाओ वो खिड़की से उड़ी मार लो, वो खिड़की के पास जाके उड़ी मार लो। कोई भी जाएगा मर जाएगा ना खिड़की से उड़ी मारने का। अरे खिड़की के पास जाना है, खिड़की पे खड़ा होना है और अंदर उड़ी मारना है, तो मरेगा क्या?
क्वेश्चंस को कैसे समझते हैं, किस तरह से लोग ट्रिक करते हैं, हमें सवाल देते हैं, ये इस लेसन में से हमें सीखनी थी। ठीक है, तो 2 लड़कियां थी, वो दोनों लड़कियों को क्या जीत थी, अपने घर पे जाके आने की, पर उसमें उन्होंने क्या किया, उनको एक शर्त दी थी, वो शर्त ने उनको क्या कर दिया, कन्फ्यूज कर दिया था, पर उन्होंने उसको क्या किया, पूरा किया। तो इसमें समझ में आया कि हमको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समझना है और किस तरह से लेसन को ये करना है। अब ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, क्या देखिए, क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। द 2 यंग वुमन रिटर्न द होम हैप्पीली विद देयर गिफ्ट्स। क्या है बताए, गिफ्ट्स के जो भी आपने देखे, एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। जिस तरह से हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, लिटरेचर है, लिटरेचर को पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तब जाके हमको ख्याल में आएगा। अब ये क्वेश्चंस यहाँ से देखिए बुक में से, तो बुक में से क्वेश्चन मिलेंगे ना, आंसर मिलेंगे, बाहर मिलेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, 3 बार अच्छे से समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार आएगा। अभी हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, अभी नेक्स्ट सेशन में अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, ख्याल में आया? यस। सबसे अच्छा है कि रीडिंग अच्छी चाहिए। क्या चाहिए? रीडिंग करते समय क्या चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्या है, समझ में। और समझने के बाद फिर जो क्वेश्चन पेपर टीचर ने दिए है उसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। अच्छे से सॉल्व करना है, दिमाग लगा सॉल्व करना है, जितने बार हो सके उतनी प्रैक्टिस करना है। गॉट इट? समझ में आया बच्चा बड़ी? ठीक है, चलो।